खुशकिस्मती है कि अच्छा हुआ कल शाम को इनसे बात कर लिया, वरना मैं आज रात को यहाँ पहुँचता कि मेरे जहन में ये था कि 28 तारीख को ये प्रोग्राम है। खैर, इन्होंने हमारी लीडर ममता बनर्जी को इस प्रोग्राम के लिए बुलाया था और ममता दी क्योंकि पहले से बहुत इंगेज हैं, बहुत मसरूफ़ हैं, उन्होंने मुझे बोला कि तुम जा कर के ये प्रोग्राम अटेंड करो और वहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनको खिताब करो, उनको संबोधित करो। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि मैं अभी हज कमेटी का चेयरमैन हूँ बंगाल में और वहाँ हज फ्लाइट्स चल रही हैं, तो मैंने उनको कहा कि मैं तो इसमें बिज़ी रहूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो ये लोग भी संभाल लेंगे, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तुम जाके ज़रूर वहाँ पर अटेंड करो। तो माइनॉरिटीज़ आप लोग समझ ही रहे हैं, मैं कुछ लिख करके लाया हूँ, लेकिन ये सिर्फ देखने के लिए और सिर्फ आपको मतलब कि मैं भूल नहीं जाऊँ कोई पॉइंट, इसी के लिए है। मैं एक ऐसे राज्य से आता हूँ जहाँ 27% माइनॉरिटीज़, बल्कि 30% माइनॉरिटीज़ के आसपास वहाँ का जो कंपोजिशन है स्टेट का, उसमें 30% माइनॉरिटीज़ रहते हैं। उसमें मुस्लिम, सिख, जैन, हमारे बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज़ भी रहते हैं। तो वहाँ के हालात दूसरे हैं, वहाँ के हम लोग जो चुनौती है वो दूसरी है, और अभी एक ऐसी सरकार वहाँ पर है जो हम लोग कह सकते हैं पूरे भारतवर्ष में कि जो मोस्ट माइनॉरिटी फ्रेंडली है। लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ तो आपके जो लुकर्स जी यहाँ पर हैं और आपके जो भी कमेटी मेंबर्स हैं उन सबको आदाब सलाम। फिर से मैं थोड़ा सा लिख करके लेके आया हूँ, तो थोड़ा सा उस पर मैं बता दूँ कि इंडिया is often referred to as a land of diversity because the whole land mass is not made up of only one community, but we know that it is made of various religious communities. Few years back in 2007 we had a Muslim president called Dr. APJ Abdul Kalam, an aerospace scientist, a Sikh Prime Minister Dr. Manmohan Singh, a renowned economist, and a Parsi Air Chief Marshal Fali Homi Major. Let me remind you that this is a country which has more than 80% of the population belonging to the Hindu community. That is the beauty of a great nation. India has 28 states and 8 union territories. All have different languages, cultures, traditions and religions, jumping from region to region. As a democratic nation, it is imperative that we safeguard the rights and freedoms of all our citizens, irrespective of their caste and religion. One of the crucial aspects to consider is the socio-economic upliftment of the minority communities. In Parliament, in Rajya Sabha, I had recently raised the issue of the discontinuation of the Maulana Azad Fellowship for minority students. Few months ago, the union government had decided to discontinue this scholarship for research scholars from minority communities for higher education. It is a sad reality that some minority groups in India face socio-economic disadvantages, including limited access to education, employment, and basic amenities. The education level report released by the Census 2011 states that only 2.75% of Muslims are graduate in our country, while the percentage rises to only 8.84 in case of Christians. So, अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो मन में आता बोल देते हैं, खास करके अभी जो न्यू नॉर्मल अगर बोल सकते हैं, ये हेट स्पीच का आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेयर हैव वी रीच्ड इन द नेम ऑफ रिलीजन, व्हाट हैव वी रिड्यूस्ड religion to is tragic. Supreme Court 2022 and 23.
Hate speeches have been fueling violence and intolerance against minorities to level never seen before. Calls for genocide, boycotting trade from some groups are common agendas behind the events conducted by fringe groups, particularly in North India. This development has gone hand in hand with the rise and consolidation of the current regime at the center since 2011, with even cabinet ministers and officials committing offences of hate bartering with impunity. Fringe elements become mainstream with time, as we have lost count of this hate speech carried out at regular basis. One of the primary challenges faced by minority communities in India is the preservation of the cultural identity and traditions. Each minority community has its own distinct heritage, and it is crucial that we create an environment where they can freely express and practice their customs and beliefs. We must encourage cultural exchanges, foster interfaith dialogue, and promote mutual understanding that bridge the gap that may exist between our different communities. Role of media is also, इसमें बहुत सवाल रह जाता है। एक ये था कि सारे जहाँ से अच्छा आप लोग सुने होंगे, उसमें एक लाइन थी कि गोदी में खेलती हैं इनकी हज़ारों नदियाँ। तो आजकल हम लोग बोल सकते हैं कि जो करंट रजीम है, गोदी में खेलते हैं इसके हज़ारों मीडिया, और वो भी हम लोग देख रहे हैं। We are also seeing that you have heard the name of Father Stan Swami and Umar Khalid on TV news. They have been branded as anti-nationals. This ongoing trend of distributing nationalism certificates by politicians and news channels is disturbing and dangerous for freedom of speech and expression. At Sahitya Ashtak Conclave held in the month of November 2019, a famous writer, Varun Grover, presented data of past 3 months regarding the news debates on top TV channels. You will be amazed to learn that 80 debates were conducted on Pakistan, 14 on Ram Mandir, 1 on PMC bank scam, but there were no debates on the unemployment rate, on the falling health care, on education, on women's safety, or even environment. The question is, why to debate a failed economy like Pakistan? But मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, that is because they want to take the narrative there. यहाँ के मसलों से ध्यान हटा करके कुछ ऐसे इश्यूज में उलझाना चाहते हैं हम लोग को जिसका कोई हम लोग के डेली ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं। मैं हाउ दिस गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट, और भी जो है कुछ लॉज ऐसे पास किए गए हैं जो हमारे राइट्स को उसको पामाल करते हैं, हमारे हुकूक को पामाल करते हैं। स्पेशली दिस ड्रैकोनियन UAPA. It is a draconian legislation which was amended in 2019 by the central government to allow authorities to declare an individual a terrorist and detain them for trial without months, sometimes years. Previously, the terrorist tag was reserved only for groups or organizations. However, the government last year informed the parliament that nearly 4,700 people were arrested under this law between 2018 and 2020, but only 149 were found guilty. That is roughly only 3% of such persons. बट जिनको यहाँ से इस एक्ट के अंदर उठाया जाता है, जिनको अरेस्ट किया जाता है, उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती है। आप अगर 100 आदमी को उठा रहे हैं तो उसमें सिर्फ 3 आदमी ऐसे हैं जो एक्चुअली गिल्टी है, बाकी जो एक्चुअली दैट इट इज़ कॉल्ड एन एंटी टेरर लॉ, बट ऑलमोस्ट ऑलवेज हैज़ बीन यूज्ड टू सप्रेस डिसेंट बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट. We are also seeing a new phenomenon of
मॉब लिंचिंग, किसी के शक हो रहा है कि उसके टिफिन में कुछ ऐसी चीज़ है जो हमसे एग्री नहीं करती है तो उसको लिंच कर दो। हम लोग देखे हैं कि घर में घुस करके उसके फ्रिज में निकाल करके कि भाई कि उसके गोश्त है, क्या चीज़ का है नहीं है वो तो बात की बात है, पहले देख करके उसको पहले लिंचिंग कर दो। तो ये एक न्यू नॉर्मल, एक न्यू हेट जो फैलाने की बात है इसमें किया जा रहा है। और अभी बोला जा रहा है कि इसके लिए जो एक्ट ज़रूरत है, इसको रोकने के लिए जो ज़रूरत है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है। इन परसुएंस ऑफ दिस 4 स्टेट गवर्नमेंट्स हैव पास्ड द लॉ अगेंस्ट लिंचिंग which include West Bengal, Jharkhand, Manipur and Rajasthan. Though the bills have been passed by the state governments against mob lynching, however, the union government has not implemented the same and has taken the view that because mob lynching is not defined as a crime in the Indian Penal Code 1860, therefore the bills cannot be formed into law against mob lynching. Moreover, last year the government informed Rajya Sabha that no separate data of mob lynching is maintained by the National Crime Records Bureau, which is not surprising at all. A failure to recognize this new form of violence in India and call it out only absolves us from introspecting the rot in our society. So what is the way forward? The world is advancing and we need to advance with it. Race, caste and religion remain significant features of our life in India. Since the time the current government has come into power, the Hindu first agenda has only accelerated. And I am not sure if my country is prepared for more. Until we completely destroy these sorts of discrimination from our society, we have no right to truly call ourselves a democratic country. India has become one of the most important countries in the world and has plenty to offer. We are a global power to be reckoned with. However, these internal struggles are breaking us and limiting us from flourishing more. In conclusion, the development of minority community is not only a matter of social justice, but also crucial for the progress and prosperity of a nation. By ensuring equal access to education, economic opportunities, healthcare, housing, and political participation, we can create an inclusive society that values and uplifts every citizen. Let us work together to build a nation where the development of minority communities is at the forefront and where the dreams and aspirations of every individual can be realized. I would like to conclude by a few lines from अल्लामा इकबाल सारे जहाँ से अच्छा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। Thank you very much, sir.